Assalamu alaikum. Hi everyone. Warmly welcome to all of you with another important video, the Saudi Aramco Work Permit Receiver Exam sample test number 4. The 3 sample tests already uploaded on the training zone, and I'm sure you will watch or might be watching already. But all these 4 tests will give you a very quick kind of snapshot of your performance and uh, the level of your preparation for this final exam with Saudi Aramco. Because ultimately जब आप थर्ड पार्टी पास कर लिया, आपने इतनी मेहनत की, वहाँ पे हैजर रिकग्निशन बुक पढ़ी, आपने लॉकआउट टैगआउट को स्टडी किया, आपने कन्फाइंड स्पेस एंट्री 3 अच्छे खासे प्रोसीजर्स आपने स्टडी किए। लेकिन ये यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा रैमको के जो फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस हैं वो उनके अपने सिनेरियो बेस्ड भी हैं और GI 2.100 और इसके अकॉर्डिंगली भी वो पूछ रहे होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रहे होते हैं, रिसीवर की, इश्यूअर की, तो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। दैट इज व्हाई दीज 4 एग्जाम मॉडल्स विल गिव यू एन आइडिया कि एग्जाम किस तरह का आरामको ले रहा होता है, कैसे ऑप्शन देता है। तो हर एग्जाम मॉडल में मैंने 25 क्वेश्चंस रखे हैं, 100 क्वेश्चंस मैंने बेसिकली सिलेक्ट किए हैं। तो इन 100 क्वेश्चंस में से आपने पहले जो 3 टेस्ट हैं अगर आपने कर लिए हैं तो आपके 25 रिमेनिंग है, जो कि मैं अभी यहाँ अभी करवाने जा रहा हूँ। तो ये 25 में क्या होगा कि वही क्राइटेरिया सेम, आई विल शो दी क्वेश्चन एंड देन विद मल्टीपल ऑप्शंस, और आपने हर क्वेश्चन के अगेंस्ट अपना आंसर खुद चूज करना है और एंड पे कंपेयर करना है जो आंसर्स मैं शेयर करूंगा, एंड देन यू मार्क योरसेल्फ, और आपको समझ आ जाती है कि आप 90% आपके आंसर्स ठीक हैं, 100% ठीक हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना लर्निंग मोमेंटम जो है वो स्ट्रैटेजी अपनी डिफाइन करते हैं कि आपने और कितना पैशनेट होकर स्टडी करना है। इवन दो कि मैं कहता हूँ अगर सारे चारों टेस्टों में आपके 100 आउट ऑफ 100 भी आ गए हैं, स्टिल और ज़्यादा आपको मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आप रैमको के एग्ज़ाम में भी गारंटीड इंशाल्लाह कि आप लोग वहाँ पे भी 100 में से 100 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर इन 4 टेस्ट में आपने 100 में से 100 अचीव कर लिए तो वहाँ पे तो ज़रूर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो गुड लक। So let's start with question number 1. Question number 1, what happens if work must continue past the time the original permit was to expire? 4 options हैं, work can continue until the job is complete, keep working but tell the issuer, stop work and come back to the next day, extend the permit and issue a new one. क्या करना पड़ेगा? What happens if work must continue past the time the original permit was to expire? जो पहला परमिट है वो तो ऑलमोस्ट एक्सपायर हो गया, तो अब आपका काम तो अभी भी उधर ही है, तो आपने अभी और आपको टाइम चाहिए, तो व्हाट यू गोना डू लाइक? तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 की ऑप्शन अपने माइंड से, अपने नॉलेज से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से चूज करना है और एंड पे कंपेयर करना है जो आंसर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा 25 क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, हु मस्ट साइन अ वर्क परमिट टू एक्सटेंड इट? कौन एक्सटेंशन कौन देगा, परमिट को एक्सटेंड कौन करेगा, कौन ऑथराइज? The area foreman or the issuer or the superintendent's counter signature needed, or the new issuer and receiver, or the new issuer, receiver and gas test? Who is authorized to extend the permit? Question number 3, who is responsible for safety at the workplace after a permit has been extended? Who is responsible for safety at the workplace after a permit has been extended? The original issuer and the receiver, the old issuer because he did the joint service inspection, the issuer and the receiver who signed the extension, or no one after a permit has been extended? Question number 4, a work permit can be issued up to 30 days if it is highly unlikely that the condition will change, the core work will be done, or the work site is far away, or the receiver cannot close the work permit. कब हमें किन कंडीशन पे 30 days का परमिट इशू होगा? Who must sign a work permit issued up to 30 days? Receiver and designated representative, or designated representative, or operation and maintenance division heads, or operations foreman, issuer and receiver? कौन साइन करेगा 30 days का परमिट सऊदी अरामको में? कौन साइन करेगा? So you need to choose your answer and move on to the next question.
If a work permit is not issued during an emergency, what must be done to the work? Superior must sign, wear escorted path, joint set inspection, all safety precautions must be taken. क्या करना चाहिए थी? If work permit is not issued during an emergency, what must be done to do the work? Question number 7, the issuer must stop work if more men were working than stated on the permit, or the issuer lost his copy of the permit, or the issuer left the job site, or the job site was found to be unsafe. So A, B, C, D. Not mentioned here, but make sure you understand. More men mean A, the issuer, the job site. So A, B, C, D. So decide your option. Question number 8, what must the issuer do with the permit after he stops work? Close the extend the permit, give his copy to the receiver, get a counter signature, write the reason of the permit. So decide your answer. The receiver must stop work if कब receiver जो है वो काम रोक सकता है? When he cannot find the issuer, the designated representative must leave. The issuer leaves the job site or the work site become unsafe. कब वो काम रोक सकते हैं? Question number 10, what must the receiver do if he stops the work? What must the receiver do if he stops the work? Tell the issuer, tell the designated representative, tell his immediate supervisor, tell the senior craftsman. Okay, so you choose your answer and ultimately you can compare at the end. Question number 11, what would be a good example of when the receiver stops work? What would be a good example of when the receiver stops work? Material have not yet arrived. He cannot read the counter signature. He hears an emergency alarm. The backhoe runs out of fuel. So choose your answer. Question number 12. What might happen if a safety problem arises and the receiver does not stop the work? Fire, injury or accident, or counter signature become void, or the certificate expires, or the work permit expires. So A, B, C, D. When the work permit be closed, कब close करेंगे जी work permit को? Before another permit is closed, or when the work is finished and the crew leaves after gases are taken, when the issuer leaves the work site, when we are going to close the permit? Who must sign the work permit to close it? Competent person, gas tester, issuer receiver, or designated representative or issuer receiver? Why must permits be closed? To allow gas tests to be taken. Question number 15, to allow the permits to be extended or to communicate the status of work or to stop all hot work. Why must permits be closed? क्यों permits को close करना जरूरी है? तो 4 options में से आपने अपने कॉमन सेंस को यूज करते हुए, अपने नॉलेज को यूज करते हुए, अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हुए चूज योर आंसर, और एंड पे आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि आपके आंसर कितने ठीक हैं, कितने गलत हैं. 16 number question, how long must the issuer keep close work permits in his file? 30 days, 60, 4 months or 3 months? कितने महीनों के लिए, दिनों के लिए परमिट्स को फाइल में रखना चाहिए? Question number 17, a receiver is, कौन है जी रिसीवर? सीनियर क्राफ्ट्समैन है, डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव है, सीनियर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर है, क्वालिफाइड इंजीनियर है, कौन है ये? मतलब आप जब अरामको से अप्रूव हो जाते हो तो आप रिसीवर हो, वर्क में रिसीवर हो. तो अल्टीमेटली इन चारों ऑप्शंस में से आप क्या हो? सीनियर क्राफ्ट्समैन कहलाओगे, या डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव, या सीनियर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर, या क्वालिफाइड इंजीनियर? आप खुद को क्या नॉमिनेट करेंगे WPR के अलावा? क्वेश्चन नंबर 18, द रिसीवर्स मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज. कि वर्क में रिसीवर की जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज या मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो कौन सी हैं? मतलब 4 ऑप्शंस आर देयर, कंप्लाइंग विद सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड साइनिंग द परमिट, or being the designated representative, filling in for the issuer when the issuer must leave, responding to operational emergencies. Question number 19, why is designated representative sometimes used? The receiver did not come to work, the issuer may be busy and need help, the gas has found high LEA readings, or too many safety problems found. Why is designated representative sometimes used?
क्यों यूज किया जा रहा है समटाइम? Question number 20, what can the designated representative do? Sign the work permit, authorize the receiver to leave, accept the receiver responsibility, inspect the work site. 4 options में से जो designated representative है वो उसको क्या करना चाहिए, क्या कर सकता है? What joint responsibilities did issuers and receiver share? कि आप वर्क परमिट रिसीवर हैं और सऊदी अरामको का जो बंदा कोई जो भी उन्होंने एज ए इश्यूर नॉमिनेट किया है, तो आपकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं इन 4 ऑप्शन में से? लाइक टेकिंग गैस टेस्ट, नेमिंग द डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव, डूइंग द वर्क, और सेफ्टी इन द वर्क साइट। आपकी क्या म्यूचुअल जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? Question number 22, why it is important that the issuer tell the receiver about safety hazards he may find at a job site? The receiver may not have worked in the area before, the receiver does not read the work permit, the receiver must respond to emergency, the receiver must take gas test. क्या मकसद है जी? Why it is important that you should tell the receiver about safety hazards he may find at a job site? Because the receiver may not have worked in the area before, or the receiver does not read the work permit. हो सकता है रिसीवर ने उस एरिया में काम नहीं किया, या उसको वर्क परमिट पढ़ना नहीं आता, या ऑप्शन सी इज कि वो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसीज को रिस्पॉन्स करेगा, या रिसीवर मस्ट टेक गैस, या वो सिर्फ गैस टेस्ट करेगा। क्या मकसद है उसका? क्यों बताता है वो सेफ्टी हैजर्ड्स जो इश्यूर है रिसीवर को? 23 नंबर क्वेश्चन, व्हाट 2 थिंग्स मस्ट द इश्यूर डू बिफोर इशूइंग अ परमिट? क्या चेक करे परमिट इशू करने से पहले, स्पेशली जो इश्यूर है? Check the receiver certificate and get counter signatures, or renew certificate and get counter signatures, provide first aid and assign a firewatch, close the work permit and check the receiver certificate. Okay. Second last question of test number 4, who goes on the joint site inspection? Receiver and gas tester, the issuer and the area foreman, the issuer and the gas tester, the issuer and the receiver. Who goes on the joint site inspection? कौन जाता है? Last question of test number 4. What 2 things must the receiver do before receiving a work permit? आपको as a work permit receiver permit receive करने से पहले कौन सी 2 चीजें check करनी चाहिए? 4 options are there. Extend the permits and take gas tests. Take gas tests and check the Scott air packs. Train the firewatch and renew the permit. Read the permit and agree to all conditions. So 4 options में से आपने choose करें. So 25 क्वेश्चंस के अगेंस्ट आपने अपने 25 आंसर्स चूज कर लिए होंगे। अब आपने वो जो 25 आंसर्स हैं आपके, नाउ यू कैन कंपेयर विद दीज आंसर्स, बिकॉज सैंपल टेस्ट नंबर 4, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज डी, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर इज सी, 3 is C, 4A, 5C, so up to 25 all answers are there. तो टाइपिंग एरर हो तो कहीं पे आपको कंफ्यूजन है, so you can comment or I will definitely reply. Otherwise you can note on my WhatsApp number, you can communicate with me and I can clear your confusion, because ultimately we all are human beings. So if any error you believe is there, please let me know, so I'll correct it accordingly. Okay, thank you very much. अपना ख्याल रखिएगा। तो 4 टेस्ट 4 वीडियोस, अगर आप ये 4 टेस्ट पास कर जाते हैं अबव 90% मार्क्स और अब इवन 100 आउट ऑफ 100, दैट मीन्स कि यू आर ब्रिलियंट माशाल्लाह। और अगर आपके बिलो 80 आते हैं, या बिलो 90, या बिलो 70, या बिलो 50, या बिलो 20, गॉड फॉरबिड, तो ये आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए। और लेकिन मैं आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आपके 100 आउट ऑफ 100 मतलब चारों टेस्ट में भी आए हैं, स्टिल अपने मोमेंटम, लर्निंग मोमेंटम को, अपना जो स्टडी का आपका पैटर्न है उसको नीचे ना लेके आइएगा, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ताकि सऊदी अरामको का एग्जाम जब आए तो आप वाकई में 100 में से 100 वहाँ अचीव करें इंशाल्लाह। एंड a lot of my students, they already achieved, and I know you can also do it. Thank you very much. अपना ख्याल रखिएगा। और अभी नेक्स्ट आई विल ट्राई कि मैं वर्क परमिट रिसीवर की जो ट्रेनिंग है वो उर्दू हिंदी में जो है, ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड है मार्केट में से, तो मैं कोशिश करूँगा कि 30 मतलब पोर्शन वाइज के टॉपिक्स को पकड़ता जाऊँ और 30 मिनट्स की वीडियोस बना के
आई स्टार्ट अपलोडिंग, ताकि एक डेली लर्निंग मोमेंटम उर्दू हिंदी में बनता रहे, क्योंकि इंग्लिश डेफिनेटली डे बाय डे इम्प्रूव करना वो आपकी नीड तो है, लेकिन मेजर नीड ये है कि समझ आनी चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो। मतलब लाइक अगर हैजर्ड्स हैं तो हैजर्ड्स क्या चीज़ है, हैजर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन करनी है तो आइडेंटिफिकेशन क्या चीज़ है। तो वो मैं कोशिश करूँगा कि आई विल टॉक इन उर्दू इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगा कि उर्दू में ज़्यादा बात करूँ, और थर्ड पार्टी की जो ट्रेनिंग है आपकी वो उर्दू में सारी अपलोड कर दूँ इंशाल्लाह। इंग्लिश में तो ऑलरेडी इज़ देयर, लेकिन इसको उर्दू में भी ज़रूर कर दूँ। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। और अपने ट्रेनिंग ऑन चैनल का भी, इस योर डेली लर्निंग क्लब, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, आप लोगों के मैसेजेस की वजह से जो आप करते हैं जी, ये जो ट्रेनिंग ऑन है आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, हेल्प आउट कर रहा है, तो दैट्स व्हाट मोटिवेट्स मी पर्सनली अ लॉट, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप हमारे चैनल पे कोई नॉलेज अपना शेयर करना चाहते हैं तो आप अपनी वीडियोस भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कम्युनिटी को आपने सपोर्ट करना है, तो मैं इंशाल्लाह आई विल स्टार्ट पब्लिशिंग योर वीडियोस एट आवर चैनल ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेनिंग जोन इंशाल्लाह। किसी भी टॉपिक में आप एक्सपर्ट हैं, दैट इज योर चॉइस, ओके। लेकिन 10 मिनट से कम ना हो। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।